Hello everybody, I am Prajakta Kori aka Mostly Sane and I am so hyped about this conversation. It's a very important one and I have someone amazing to do it with. So let's hear it from Vishal Langthasa from Assam, who has a channel called Chugli TV. Oh my god, I cannot believe I'm having this conversation with Prajakta. This is quite a moment for me. No, thank you. I appreciate that so much and I'm so happy that we get to sit down and talk about something that you are passionate about, that I've been very closely working on for the past few years, and it's amazing that we get to have this conversation. So we should directly jump in. But before we jump in, I think जो भी हमें देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि this is just an educational curve, this is a learning curve for all of us creators. और जब हम अभी जो हम discuss करेंगे, we don't really speak for the entire community. Thank you so much for saying that because I totally agree with this because there's so many तरह के cultures हैं North East में. मैं सबसे अच्छे से सिर्फ खुद को ही represent कर सकूँगा और सब लोगों के लिए नहीं बोल सकता. So this is such an important message for you to say. Thank you so much for that. Getting right into it, I think सबसे पहले मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में पूछना चाहूँगी जो कहीं हमारे सबके दिमाग में ना नॉर्मलाइज हो गई है कि एज क्रिएटर्स एज ऑडियंस हमें कभी कभी समझ नहीं आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज इट्स जस्ट बिकम सो नॉर्मल इन ऑल आवर कॉन्वर्सेशंस एवरी डे ग्रोइंग अप एंड अदर देन दैट. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जब हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर डाउनराइट इनअप्रोप्रिएट? The first thing that comes to my brain right now is that कि जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो मैंने बहुत बार देखा है कि लोग ऐसे बात करते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं है. एंड इट्स नॉट वेरी ब्लेटेंट, इट्स वेरी सटल. जैसे कि उनके सेंटेंसेस होते हैं कि ओह ये असम में भी होता है, ये तो इंडिया में भी होता है. एंड द सेकेंड थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज दैट कि हम लोग कभी कभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में सिविलाइज्ड लोग नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही. इट्स अ लिटिल वियर्ड. तो आई थिंक हमको वो अवॉइड करना चाहिए. नो वंडरफुली सेड. स्टीरियोटाइप्स की बात करें तो लेट्स ब्रेक इट डाउन फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग टू अस राइट नाउ. कैसे अवॉइड किया जा सकता है इन स्टीरियोटाइप्स को? This is an amazing question. Thank you for asking. पहले हम लोग को जानना चाहिए कि अगर कोई मुझे देख के मेरे बारे में कुछ assumptions बना ले, इसको बोलते हैं stereotype. So you mean कि जैसे अगर कई बार ऐसे होता है कि you see someone from the northeast and A, you assume they're from the northeast without asking them if they are or not, or B, you just assume that इनसे हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं because इन्हें समझ नहीं आएगी, or things like that. Is that what you mean? Exactly. So there's a hack to this. Okay, hack number 1 is obviously don't assume things. And hack number 2, किसी के बारे में उनको बिना stereotype किए भी बात कर सकते हैं. Wow. Yeah. So looking at how to make things better as creators, so what is an appropriate and acceptable way of addressing the community? Well, there are a lot of ways in which you can correctly represent a community. जब हम ये टर्म यूज करते हैं नॉर्थ ईस्ट, एज इफ नॉर्थ ईस्ट एक होमोजेनियस एरिया है जहाँ का कल्चर सिमिलर है, बिकॉज दैट्स नॉट ट्रू, राइट? ट्राई एंड मेंशन द स्टेट और द टाउन or the area that you're talking about. So that way you'll not just be educating your followers, you'll also be looking really intelligent. And just to mention, not all stereotypes are that harmful. जैसे कि एक बहुत बड़ा stereotype है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, सब लोगों को गिटार बजाना बहुत अच्छे से आता है. तो मुझे नहीं आता गिटार बजाना, but I will enjoy if you think that I am the next Jimi Hendrix. I'll be really flattered. Yeah. Moving on, जब as creators हम content बना रहे हैं, what are some of the things that we should keep in mind when we are scripting or shooting? Just be sure that you are not writing too much on a person's certain regional characteristic. And also, like when we write jokes, we should try and not punch down on a certain community. Another question I'd like to ask you is, as creators, how do you think we can be more inclusive, towards different races, different communities coming from different parts of the world? How do we be more inclusive about this? First and foremost, be open to learning. Make friends from all kinds of communities. What is stopping you? I don't think anything is stopping us. Make friends from the Northeast. Don't be scared of apologizing. Don't be scared of making mistakes. जैसे कि सोचिए कि अगर आपने एक
स्टेट के लैंग्वेज को दूसरी स्टेट का लैंग्वेज बोल दिया, इट्स अ वेरी स्मॉल मिस्टेक. डोंट वरी, जस्ट अपोलोजाइज, दैट्स इट एंड मूव ऑन. और बस जनरली लाइफ में यही सोच के चलिए कि कोई भी कम्युनिटी, कोई भी रीजन आपके ऊपर या नीचे नहीं है, हम लोग सब इक्वल हैं. एज क्रिएटर्स वी हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एवरीवन फील इक्वल, मेक everyone feel included. And I think just adding on to what Vishal said, as creators, we should never ever be scared of asking questions. Exactly. This has been amazing, Vishal. Thank you so much for speaking so honestly about these things, and please keep doing all the work that you are doing. Yes.